Good morning to all of you. So, in the last session, we had just gone through with the glossaries what is cost, what is investment, why cost and management accounting, how it is different from financial accounting. Financial accounting is statutorily required by company law. So, every company has to maintain, every company has to present it. But cost is also very important, and for internal purpose management accounting is also very important. Every company wants to know how much is the production charges, production cost, so that pricing could be determined, profit margin could be maintained, proper production decision could be taken. This is what the basic essentials of any organization. Until unless they know the entire cost sheets at the different level of production, they can't optimize their production. They will not be able to plan their profitability. So it is essentially required. Today's session, I'll be more focusing on management accounting, which is extended version of cost accounting. When we use the word management accounting, it is more for internal purposes. It is more related to that organization can decide how best it has to be produced. Like you have to take a decision. If you are making a group of products, you have to take a decision which product you should produce more. Say even as simple as you go to a pizza center, they must know that it is the small size, medium size or family size, which size is more demanded. What is the profit margin of that product? So it is a very simple organization component, very simple part, and you can extend it to any organization. Say for example, Tata Motor is there. Tata Motor is producing n number of vehicles, right or not? Starting from a small vehicle to larger vehicles, multi-axle vehicles. Question is which vehicle is having more demand? So this is the way through which it is going to come. Now a question arises here. Now it is coming. Okay. So it is a question now that how to decide about it. So today's class is focused on that, and we will go through one by one what kind of information we should we should be caring so that this decision should be effective. Have a look on the slides. What is management accounting? So management accounting is the process of identification, measurement, accumulation, analysis, preparation, interpretation and communication of information that assist managers. Now managers has to take a decision related to production, decision related to procurement, decision related to shipments. Now on what basis they have to take a decision? So it says it is an identification, measurement, accumulation, analysis, preparation, interpretation and communication of information that assists managers in a specific decision making within the framework of fulfilling the organizational objective. Now organizational objective is also very important. The one prime objective for any organization, until unless otherwise it is decided, is profit maximization. Right? Basic identification, basic specification
to an organization is that you have to maximize the profit. So maximization of profit could be possible. I think I had already little highlighted in the previous session that either you can be generating more revenue, increase your revenue, or reduce the cost. Clear? Increasing the revenue can be done through two different ways. First one is either you can increase the price or increase the quantity sales. Increasing the price and increasing the quantity sales could be making it. So what you suggest, increasing the price is possible? Is it that easy task? No. Why it is not? Because increasing the price is possible only when product pricing is inelastic in nature. Increasing your price will not affect your demand, then only you will have a better revenue. But if it is an elastic demand, then in that case quantity demanded will go down and you will be in a loss. So it's better not to increase the price until unless very sure that demand is inelastic in nature. Am I clear? And audible to last? Now the second is quantity increment could also be there. Increase your quantity. And how you can increase your quantity, this is the question mark. Increasing the quantity could be possible only when you will be able to explore new market, or you will be able to retain your existing market through your product innovation. Why product innovation is essentially required? Why you require to keep on changing your product? Because when you are changing your product, then only you will be able to make that product always in demand. Otherwise anyone can substitute your product. Very fierce competition is always there in the market, right? Even distant substitution is also available. That distant substitution is very, very important. So you have to be very careful. This all set of information is essentially required to a manager to decide about it. Manager must know that what is the point where there is a possibility that some other product is required. You yourself is needed to change your model, change your taste, change your scheme. Until unless you decide that, it will not be possible. So all set of information. So how to identify those things, how to measure that thing, how to analyze it, how to make a preparation related to those statements, then interpretation and communication. These all are the management accounting components. Now where it is going to get applied, have a look of application. Planning the decision. Okay, you have to plan, and when you are planning the decision, then in that case you require estimates of future cost and revenues and establish the course of action. So what is really required? Three things. First one is what kind of quality you want to produce. The word quality, when we say, you have to put the specification into it. What kind of product you are going to produce? Kaisa product, that's what it is required. Every product will not be of the same volume. Take any example in any field, any sector, any industry, or for any company. It is not going to be same. And you will find out, suppose a leather manufacturing organization or leather items manufacturing organization is there, who makes a small wallet also. So wallet, bag or bag, big bag, briefcase, leather briefcase. Do you feel every item will have the same quantity production, uniformly distributed? No. For example, again, let's say Maruti Udyog Limited. Maruti is producing Maruti Alto also, and as well as higher version of Maruti. Will it be having same number of quantity to produce?
No, that's very, very important how you are going to decide what is really needed. So what I mean to say here is these decisions are very important. When you are planning, so it says require estimates of future costs. Now I'll give you, let's have some interaction. First important question I'll ask you. Suppose a company is producing two different products, two products only. One product is a smaller, high volume product. Second product is larger, high value product. एक का वॉल्यूम हाई है, दूसरे का वैल्यू हाई है. अब आप एक बात बताओ कि कंपनी दोनों प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है, दोनों प्रोडक्ट का क्वांटिटी कितना होना चाहिए, कैसे डिसाइड करेगी? क्या क्राइटेरिया होना चाहिए जिससे ये डिसाइड हो कि कौन सा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करे ज़्यादा, हाई वॉल्यूम वाला या हाई वैल्यू वाला? हाई वैल्यू वाला. क्यों ऐसा? उसमें क्या होगा ज़्यादा? रेवेन्यू जनरेशन ज़्यादा होगा. हाई वैल्यू वाले में कस्टमर भी तो कम होंगे. जिसका डिमांड ज़्यादा होगा. ओके, दैट्स, एक्सक्यूज मी प्लीज, that's a very important aspect. High value and how high volume, these two things which you mentioned, of course it is important, but it is simultaneously criteria. When you decide, you have to look into which is going to give you high profit margin, right or not? Where ultimately profit margin will be there. Suppose at one place, excuse me, suppose at one place, one item, you have 1 rupee profit margin, just 1 rupee, and in another item you have 1000 rupees profit margin, high value. 1000 का प्रॉफिट होगा सेल करने पे, एक यूनिट सेल करने पे, और दूसरा हाई वॉल्यूम छोटा प्रोडक्ट है, 1 रुपये का प्रॉफिट होगा. लेकिन अगर आप दिन भर में छोटा वाला है जो हाई वॉल्यूम वाला है वो 5000 यूनिट सेल कर लेते हो, तो कितना प्रॉफिट मार्जिन हो गया आपका? 5000. और वो एक यूनिट बिक रहा है, कितना होगा? 1000. Yes or not? And this will help you to understand later on a word very commonly used in marketing called FMCG. What we call it? Fast moving. फास्ट मूविंग में बहुत मार्जिन नहीं होता, बट उसके मार्जिन छोटे होने के बावजूद भी दैट मार्जिन इज बिगर. एट द एंड ऑफ द डे इट इज गोइंग टू गिव यू वेरी इंपॉर्टेंट एंड गुड मार्जिन, ओवरऑल मार्जिन, राइट? So you have to estimate, you have to make sure that how the entire decision is going to take place, what kind of entire profit margin is going to work. That's important, right? Now how it is going to work. So this is what require estimates of future cost and revenue, how much it is generated. Sometime it might be possible you may not require to wait for a particular one. FMCG you can't hold. आप किसी दूसरे प्रोडक्ट में जो स्लो मूविंग प्रोडक्ट है, वेरी स्लो मूविंग प्रोडक्ट है, वहाँ आप वेटिंग टाइम क्रिएट कर सकते हो. पीपल विल वेट. FMCG में पीपल विल नॉट वेट. अगर मैं आज ब्रेड लेने जाऊं और दुकानदार कहे कि सॉरी आज नहीं है, कल आ जाइएगा, कल दे दूंगा, चलेगा? नहीं चलेगा. मिल्क लेने जाऊं, चाय पीने जाऊं और कहूं कि हाँ जी आज मुझे दे दीजिएगा, विल इट बी पॉसिबल? नो. व्हाट इट मीन? इट इज इंस्टेंट रिक्वायरमेंट. और 2 बार जिस दुकानदार ने मुझे लौटा दिया, क्या तीसरी बार मैं उसके पास जाऊंगा? तीसरी बार मान के चलूंगा इसके पास नहीं होगा. So what is really required? But some product you are waiting for not to, even if says after 1 week, you are waiting for 1 week. So you have to be very careful how you are going to plan with, right? Who have to understand this? The manager
who is going to get involved into decision making process. When you are involving in your decision making process, you must know that what is nature of your product, what is nature of your market, what is nature of consumer behavior, and ultimately accordingly you will be deciding how you are going to plan it. So you require a future costs, future revenue, and then accordingly you will decide your course of action, estimate course of action. Similarly, control decision is there. There is a possibility something you decided may not necessarily be turning, may not necessarily be running as per your wish. So what is going to be there? Implementing the plans. Plans should get implemented properly. The way you thought of, the timing you thought of, the cost estimates you created, if little bit you will be loose, you will be lenient, you will become inefficient. And if you become inefficient, your cost will go up. And if cost goes up beyond your estimated cost, it will kill your margin. It will kill your profitability. And if it goes beyond that for a longer period, it will question mark your survival itself. Company fails. Yes or not? Timing you can feel it. The first prima facie feeling can come. कि ऐसा कैसे हो सकता है सर, जो कंपनी है, पढ़े लिखे मैनेजर हैं, सब मैनेजमेंट क्वालिफाई करके आए हुए हैं, वो ऐसा कैसे फेल कर सकते हैं. एक नेचुरल क्वेश्चन ब्रेन में आएगा. I'll tell you, this very feeling itself is the beginning of the mistakes. कि I know better, I am a professionally qualified manager, मैंने तो BFIA कर रखा है, फाइनेंस कैसे मेरा गड़बड़ हो सकता है. ये फीलिंग ही स्टार्टिंग पॉइंट है गड़बड़ होने का. राइट? बड़े बड़े कंपनी के नाम हैं और फाइनेंस का फेल्योर का तो लिस्ट लगा हुआ है. और अभी रिसेंट भी फेल्योर हुआ है. रिसेंट कंपनी कौन फेल किया है? कौन सा? जोर से बोलो भाई. अरे अडानी कहाँ फेल किया? अडानी को तो फेल करवाने को, अडानी तो बहुत आगे है. मैं कह दिया तुम फेल कर गए तो तुम फेल कर गए. पहली बात है कि फेल का मतलब क्या होता है? कंपनी फेल करना. When company is continuously in red means loss. And accumulated loss eats away its net worth. So some of the terms which is important. First one is profit or loss. It comes from income statement, that is profit loss account. Profit or loss is profit after tax, whether it is positive or negative, that decides about profit or loss. Second important is net worth. I said, anyone who can give the definition of net worth. What is net worth? How to define net worth? Please define net worth. फिर से बोलिएगा. एसेट? नो जी, एसेट माइनस लायबिलिटी कैसे होगा? व्हाट इज नेटवर्थ? आप लोग ध्यान से सुन नहीं रहे हैं तो कैसे होगा? व्हाट इज नेटवर्थ? नेटवर्थ इज पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स. प्लीज कीप जॉटिंग डाउन. पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व इज कॉल्ड नेटवर्थ. Paid up capital is actually shareholders fund. Free reserves is also shareholders fund. So it is total shareholders fund is net worth. And if whatever the loss is there, if loss starts becoming bigger than the paid up capital and free reserves, then in that case company will become insolvent. Company will be completely bankrupt. When the company's shareholders fund is not sufficient to take care of the losses. Okay, that is the failure of the company. So what manager has to be looking into? First thing which is very importantly required, loss should not be there, because loss is going to damage the entire organization's future flow. Loss should not be there.
If there is an occasional loss because of some external reasons, that could be tolerated, but you have to be very alert. This is what really required. So these are the parts of a management planning. फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सिर्फ रिपोर्टिंग था, ध्यान दीजिएगा. फाइनेंशियल अकाउंटिंग विच यू हैव डन, इट वाज अ रिपोर्ट ओनली, बट एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट यू हैव टू बी अलर्ट एज ए मैनेजर. आपको एफर्ट लगाना है, एंड दैट एफर्ट इज नथिंग बट हाउ यू आर गोइंग टू डू इट बेस्ट. That is required, and that will be possible only when you are doing your work effectively through a planned way. And this is what management accounting is. How you are concerned, so you will like to estimate your everything. You will try to predict future and work accordingly. So this is what it is there. So what is really required, whatever you have planned, implementation should be that. Implementation should be accordingly, so that a successful exercise could be made. So that's the first point, implementing the plans. Second, so planning effectively, be alert at the time of implementation. Third one is monitoring the actual results. ध्यान से देखिए रिजल्ट कैसा मिल रहा है आपको, जितना प्लान किया था क्या उसी प्लान में है. मैं आपको थोड़ी देर पहले रिपीट कर रहा था, बता रहा था कि देयर आर ऑर्गेनाइजेशंस हु हैव फेल्ड, there are organizations who are delayed, there are organizations who lacks. अगर इंडियन इन्वायरमेंट में भी फेल्योर की बात करेंगे, यहाँ भी फेल्योर का सीरीज है. एक साइट है, आप लोग नोट कीजिए, IBBI का साइट है. IBBI स्टैंड्स फॉर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया. ये सब इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, नोट करते चलिए. इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, IBBI, जो जिसने प्रपोज किया, जिसने इम्प्लीमेंट किया है IBC, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड. IBC क्या है? इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड. इट हैज़ बीन इन द ईयर 2016 इम्प्लीमेंट हुआ है. ये सब इंफॉर्मेशन अब आपके एग्जामिनेशन में आने वाले हैं, तो आप लोग थोड़ा अलर्ट होके इसको तैयार कीजिएगा. तो ये जितनी भी कंपनी फेल करती है, आप यहाँ जो लेंडर है या कंपनी भी इसमें अपने आप को फाइल कर सकता है, जहाँ से रिजोल्यूशन होता है, इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन. एंड इस रिजोल्यूशन के लिए सेपरेट कोर्ट है, नॉर्मल कोर्ट से अलग होके एक कोर्ट है जिसका नाम है NCLT. हैव यू हर्ड द टर्म? NCLT है. और NCLT वगैरह के साइट पे या IBIB के साइट पे जाओगे आप, तो आपको लिस्ट ऑफ कंपनी जो फेल की हैं, वो फेल्ड कंपनी का लिस्ट मिल जाएगा. और उस कंपनी के फेल होने के कारण आप एनालाइज कर सकते हो. यू कैन गो थ्रू विद दैट डिटेल, एंड दोज डिटेल्स आर गोइंग टू बी मोर इम्पॉर्टेंट. दोज डिटेल्स आर a help that we should not commit that mistake when we are running a company, right? तो आप अपने रिजल्ट को मॉनिटर कीजिए, और अगर रिजल्ट डेविएटेड है, दो तरह का डेविएशन हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन. व्हाट इज पॉजिटिव डेविएशन? फेवरेबल होगा, अच्छी बात है. आई थॉट माई प्रॉफिट विल बी 20%, माई प्रॉफिट केम 25%, इट इज़ गुड. बट अगर प्रॉफिट 20% की जगह 2% रह गया, तो इट इज़ ए ग्रेट कंसर्न कि अभी तो 2% प्रॉफिट है, अगली बार अगर यही हाल रहा तो नेगेटिव हो जाएगा. दैट इज़ वॉट योर कंसर्न. सो यू हैव टू मॉनिटर द एक्चुअल रिजल्ट, एंड देन मिनिमाइजेशन ऑफ डेविएशन. मिनिमाइज योर डेविएशन. डेविएशन हैज़ टू बी मिनिमाइज्ड. क्लियर? मेक श्योर दैट. सो हाउ यू विल बी लुकिंग इनटू इट? मेजर द डेविएशन. आप लोग पढ़ चुके होंगे स्टैंडर्ड डेविएशन. मेजरमेंट ऑफ डेविएशन इज डन थ्रू स्टैंडर्ड डेविएशन.
और स्टैंडर्ड डेविएशन को मिनिमाइज कीजिए, मेक श्योर दैट इट शुड नॉट डेविएट, एंड दैट इज वॉट योर एफर्ट इज, दैट यू हैव टू मेक इट. ऐसा है कि आपके एग्जामिनेशन में हो सकता है आने वाले टाइम में अब इस पेपर के ऑनवर्ड ही केस एनालिसिस भी आ सकता है, और जब केस एनालिसिस आएगा तो आपको बहुत केस वाइज समझना होगा. केस और कुछ नहीं, एक सिचुएशन होता है. दैट सिचुएशन हैज़ टू गेट एनालाइज्ड एंड व्हाट बेस्ट कुड बी पॉसिबल. अब देखो, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू what are the various differences between financial and management accounting. Still, some of the important exercise is there. Financial accounting and management accounting. Management is meant for internal. That's why most information related to management accounting will not be available in your public domain. Right. Second one is मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज गोइंग टू गिव यू एम्फेसिस ऑन फ्यूचर. आगे कैसे करना है. फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज ए हिस्टोरिकल रिपोर्ट. व्हाट हैज ऑलरेडी हैपेंड यू आर रिपोर्टिंग दैट. इट इज कंपल्सरली रिक्वायर्ड. मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज ए प्रेडिक्टेड वन, प्लान्ड वन, फ्यूचरिस्टिक वन. फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज एक्सेप्टेड थ्रू गैप, generally accepted accounting principles. There is no as such gap in the management accounting. Management accounting is more related to plan. That's why there are great difference between two managers, how they are running it. I'm quoting you an example. Please listen very carefully. After division of Reliance between two brothers, Mukesh Ambani and Anil Ambani, both had got more or less same value of the property and company. Equidistribution was there. Rather, Anil Ambani had got more futuristic business into their portfolio, whereas Mukesh Ambani had got more traditional business which has got limited growth potential. But within 10 years of time, the difference went to a greater extent, and as on date we know Anil Ambani's company is a failed company. Right or not? It has already been bankrupt. So you can understand the mega business, established business, futuristic business, and if you don't know how to handle, you don't know how to manage, you will simply ruin it in a decade time. So well established business got ruined just because you don't know how to run it. I say that it is more because how the company is run was not known to him. Now an interesting part. Please listen carefully. If you go through with the qualification of Mukesh Ambani and Anil Ambani, you will find out both are management graduates from renowned university. Right? You can cross check. एक शायद वॉटन से है, एक कैलॉग से है, जो वर्ल्ड के रेनाउंड यूनिवर्सिटीज में मैनेजमेंट में माना जाता है. बट अगेन mere theoretical knowledge will not help you. So I am simply telling you a small story which will make you understand why actual learning is important. Mukesh being elder, he was handed over. The one good thing Dhirubhai Ambani did,
And what he did was, he handed over the entire charge to Mukesh Ambani in his lifetime only. He said, I am calling for a retirement. And Dhirubhai Ambani went on retirement, self retirement. Enough is enough, now I am out. And he handed over to Mukesh Ambani. Within a year time, or maximum 2 years you can say, company entered into diseconomies. Diseconomies. I'm giving you the two words. Economies of scale, have you heard? And second word is diseconomies of scale, reverse of economies of scale. Cost started rising. Company started facing a lot of problem, and resulting into a situation, company's profit started going down. Fortunately, Dhirubhai there at that point of time, he was not management graduate, qualified management graduate. धीरूभाई अंबानी कभी किसी मैनेजमेंट कॉलेज में एडमिशन लेके नहीं पढ़े थे, but knowing the business very deeply inside, how to run the business. And by the time he had handed over to Mukesh Ambani, Reliance was Reliance, known to world. Reliance was in Fortune 500 list. कोई छोटा बिजनेस नहीं दिया था मुकेश को, एस्टैब्लिश्ड बिजनेस था, वर्ल्ड का बेस्ट बिजनेस दिया था, डाइवर्सिफाइड बिजनेस ग्रुप था. लेकिन डिसइकोनॉमी जो स्टार्ट हो गया, तो फिर मुकेश अंबानी को बुलाया, बोले बेटे क्या कर रहे हो, ऐसे बिजनेस रन नहीं होता. ये तुम्हारा देखो, शायद मुकेश अंबानी का क्वालिफिकेशन आप चेक करो अपने मोबाइल पे, और वो स्टैनफोर्ड का शायद पढ़ा हुआ है, चेक करो. बोला ये कौन सा मैनेजमेंट पढ़ के आए हो, दिस इज नॉट अ वे टू रन द बिजनेस. देखो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं है, जो कर रहे हो रिपोर्ट करते चलो. मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए बहुत जरूरत है. यहां आपका टैलेंट टेस्ट होता है, क्वालिफिकेशन टेस्ट की जरूरत नहीं है, टैलेंट टेस्ट की जरूरत है. टैलेंट टेस्ट हो रहा है. बोला ऐसे नहीं चलेगा. और तब उसके बाद एक कंडीशन लगाया गया, ए फादर टू सन. बोला मैं तो वापस ज्वाइन नहीं करूंगा, बट यू हैव टू डेली रिपोर्ट मी इन द इवनिंग आफ्टर कमिंग फ्रॉम ऑफिस. जो उस समय काफ़ी मीडिया में बीच बीच में फोटोग्राफ भी आया. फोटोग्राफ वॉज लाइक दैट, धीरूभाई अंबानी इज सिटिंग ऑन अ चेयर and Mukesh Ambani being a managing director of the then Reliance company, Fortune 500 company, sitting on the ground in the room. जो एक फादर और सन के बीच जो एक नॉर्मल वे में, जो इंडियन ट्रेडिशन के साथ, जो बिलीफ के साथ, जो रामायणा स्टाइल में जो बैठते हैं कि फादर के पैर के पास बैठ के और ज्ञान ले रहे हैं, जैसे गुरु से ज्ञान लेते हैं. एंड द इंटायर exercise went till Dhirubhai Ambani was live, and it transformed Mukesh Ambani. Qualification didn't transform him, but that lesson every evening, the actual way of doing business every evening transformed him. Unfortunately, that opportunity was not available to Anil Ambani. Rather, he didn't try for it. Same house, he didn't try for it. Time has given the result. One can cross check. Kind of discussion after demise of Dhirubhai Ambani, even in a board meeting, Mukesh Ambani, without any second thought, without any hesitation, kept on saying that whenever any decision had to be there, expected from managing director,
He used to say, Papa used to say like this, Papa says like this. So media started mocking him. His mockery was Papa's boy, Dad's boy, but he never minded it. But that Dad's boy today has made it possible that it is now Richie Rich list of the world. And we all know it is not Modi's, benefit to Mukesh Ambani. It is rather that kind of a mindset which has got cultivated. He will do any business, that business will be successful. That is the management mantra. Why I mention this story to you all, that don't get mesmerized with the qualification or certification. ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां फेल कर रही हैं, क्रेडिट स्विस जैसी कंपनी फेल की, आज सिलिकॉन वैली बैंक फेल किया है, इसमें सारे जितने बिग मैनेजर का नाम लो, सबके पास बड़े क्वालिफिकेशन है. सबसे बड़ा बड़ा क्वालिफिकेशन सो कॉल्ड इंस्टीट्यूशन के नाम से, अमेरिकन इंस्टीट्यूशन है, चाहे हार्वर्ड हो, स्टैनफोर्ड हो, कैलोग्स हो, वॉटन हो, और उन्हीं के सारे मैनेजर्स हैं जो कि कंपनी को बर्बाद कर रहे हैं, लाइन से बर्बाद करते चले जा रहे हैं. और मैं ये आज नहीं 20 साल 25 साल से बोल रहा हूँ, जब से मैं पढ़ा रहा हूँ. मेरे पास हर वक्त का लिस्ट है और सबके टॉप प्लेयर्स हैं. इसका मतलब मिसिंग पॉइंट क्या है? मिसिंग पॉइंट इज द एक्चुअल बिजनेस सेंस, बिजनेस लर्निंग, how to manage and how to do it. This very subject ultimately is going to decide it. और मैं जो आपसे बातें कर रहा हूँ, अगर हो सकता है आने वाले एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पेपर में इसी पे बेस्ड आपको एक केस स्टडी, बी अलर्ट ऑन दैट. इशारा काफ़ी है. ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट. Relevance and flexibility of date. Management accounting is not like a strict one, 1st April to 31st March. You can plan accordingly in between. Emphasis on precision. Financial accounting talks about precision. बैलेंस शीट बैलेंस होना चाहिए, हर रुपए का हिसाब होना चाहिए. यही है ना? मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ऐसा नहीं है, एक हम अप्रॉक्सीमेट लेके चलते हैं. मैनेजमेंट अकाउंटिंग मोर प्लानिंग है, एग्जीक्यूशन है, इम्प्लीमेंटेशन है, ऑर्गेनाइजेशनल फोकस. मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज मोर ऑन ऑर्गेनाइजेशन, नॉट ऑन द लेजिस्लेशन, नॉट ऑन द एक्ट, कि कौन सा रूल लागू होता है, कैसे एक्सप्लेन करेंगे, लीफो अप्लाई करेंगे, फीफो अप्लाई करेंगे, कौन सा डिप्रिशिएशन मेथड यूज़ करेंगे, कैसे रिपोर्ट करेंगे. इन सब से दूर है मैनेजमेंट अकाउंटिंग. हम काम कैसे अच्छा करेंगे वो देखता है. सो इट इज़ ऑर्गेनाइजेशनल फोकस इज देयर. नेक्स्ट इज यूज ऑफ अदर डिसिप्लिन. मैनेजमेंट अकाउंटिंग टेक इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल द डिसिप्लिन्स, इवन सेलिंग डिपार्टमेंट से, परचेजिंग डिपार्टमेंट से, ऑपरेशनल डिपार्टमेंट से, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से, गवर्नमेंट लेजिस्लेशन, एवरी इंफॉर्मेशन यू टेक. मुझे अगर बाइक बनाना है और मैं 4 कलर का बाइक बना रहा हूँ जिसमें ब्लैक कलर है, लेकिन 70% ब्लैक कलर ही बिकता है, तो मुझे प्रोपोर्शन उस तरह से बनाना पड़ेगा. दैट आई हैव टू प्लान. इट्स नॉट लाइक दैट 4 कलर है डिवाइडेड बाय 4 कर दूंगा. नो, इट्स नॉट पॉसिबल. आई हैव टू क्रॉस चेक व्हाट इज रियली नीडेड. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. आप कैसे करते हैं? एंड फ्रीडम ऑफ चॉइस इज ऑलवेज देयर. द वे यू वांट यू कैन मेक इट, and that will decide your entire production capacity, production systems. Once your background is clear, objective is clear, spread is clear, whatever the horizontal spread is there, what exactly you have to do, rest is mere calculation which you can easily do. So now we will be talking about, now I have already discussed you some of the cost terms, but now you will be looking into how the types of cost actual for calculation we are going to specify, how we are going to do it. So look here, basics of cost classification, how you will be based, on what base cost is going to get classified. So management accounting, objectively it is clear. Any question on management accounting?
What is difference between financial accounting and management accounting is clear? Financial accounting is really very, very important legally, and as per legislation it is compulsory. It has to be presented so that what you are doing rest of the world should know, every stakeholder should know. But management accounting is important for yourself. If you don't do that, if your management accounting is not good, a time will come your financial accounting will not be good. Right or not? अगर अच्छा नहीं करोगे तो वर्ल्ड को दिखाओगे बाद में क्या, बताओगे क्या बाद में? Clear? Look into that. Now, basis of cost classification. One is nature of elements, some material, labor, overhead. That's one. Production. So that's the one basis. Your entire cost will be segregated into three broad categories: material cost, labor cost, and overhead cost. Second criteria is production cost, administrative cost, and sales and distribution cost. Clear? Direct cost and indirect cost. Fixed cost, variable cost, semi-variable cost. By controllability, controllable cost, uncontrollable cost. By normality, normal cost and sometime occasional cost. Capital cost or revenue cost, or capital expenditure and revenue expenditure. Capital expenditure is normally one-time cost, revenue expenditure is a regular cost. Simply saying buying a car is a capital cost, and diesel is a, or petrol is, or gasoline is a revenue cost. Both are important. Time wise it is a historical cost, current cost, future cost. So you can decide about it. According to planning and control, it could be budgeted cost, standard cost, actual cost. Entire variance analysis will be based on this: budgeted, standard, and actual. For managerial decision purpose, there could be marginal cost, there could be sunk cost, differential cost, opportunity cost. And other cost could be program cost, joint cost, conversion cost, committed cost, and discretionary cost. These are the various terms which are very important. Three important segments you have to understand here. What are those three important segments? First one is going to be, these terms are important and may be very, very important for your internal test. आपको यहाँ से क्वेश्चन आएगा इंटरनल टेस्ट में, यू हैव टू प्रिपेयर इट. किसी भी टर्म का एक्सप्लेनेशन बाद में कहेंगे, जैसे पीछे लोग कैसे कुछ बातें कर रहे हैं, बाद में कहेंगे वह कंफ्यूजिंग है, तो क्लास में आने के बाद भी क्लास में अगर नहीं है, मुझे रिकॉर्डिंग पे बोलना पड़ रहा है, यही काफ़ी है. और अभी अगर कैमरा ऑन नहीं होता तो मैं अभी तक बाहर कर दिया होता. They don't understand these basic things. If not required to learn, not required to come. No compulsion, no attendance. If any more sound will be there, I'll blacklist you in from the class. So I know that if I start asking you people in the question right now, just because of this compulsion I am sitting here, in a minute time your content and your capability to answer will be on the surface. लर्न करना है करो, नहीं करना है बाहर जाओ. So first is that it is going to be numerical. That's very important. इंटरनल टेस्ट में इससे क्वेश्चन आएगा, न्यूमेरिकल इस पे आएगा, सारा 3-4 प्लेसेस पे जितना मार्जिन वगैरह सब कुछ है सारा न्यूमेरिकल पे बेस्ड है.
वहाँ कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, कैसे इन्वॉल्व होगा, कैसे यूज होगा. Third, which is very important, application is based on that. What is the objective of a manager? To increase the margin. A profit margin is increasing the more the margin, more the space, more the possibility to compete in the market, longer time frame to compete in the market. That will be there. So if it is so, then in that case you have to plan accordingly. And how you are going to plan is very, very important. So look into that. How cost you will be calculating. It may be per unit, maybe you're based on input, maybe on based on distance, area, center, anything, cost per center, which is very important. Say bank is there and bank has got n number of branches. So what are the total branch costs? If suppose I'm heading the SBI and I want to make sure that those branches which is mere cost not able to survive, not able to contribute, I will simply shut down those branches. I will not like to open that. Say I am having a chain of restaurants, those restaurants which is not contributing to a good extent, I will close down those restaurants. First I have to decide about that. But now I am having one simple question to you. If you can answer, I will be happy. What is the difference between cost center and profit center? And not only that, जो बोलेगा उसको मैं additional marks भी दूंगा. What is the difference between cost center and profit center? It's an offer is there. Okay. क्या हुआ? क्लाउड किचन क्या होता है? अच्छा. Anyone else? सर कॉस्ट सेंटर को होते हैं जिसमें हम कॉस्ट कम करने की कोशिश करते हैं और प्रॉफिट सेंटर में प्रॉफिट बढ़ाते हैं. अरे वाह, क्या बात है. Yes, this side also some hand has raised. कॉस्ट सेंटर में कॉस्ट को कम करने के लिए क्वालिटी मेंटेन है. प्रॉफिट सेंटर वॉल्यूम ज्यादा कोशिश करते हैं. No way. Anyway, I had asked you, but I had expected one or two answers should come. You tried your best, but that is not the answer. We have to make it more clear. जैसे इसमें डायरेक्टली अगर सपोज कीजिए आपके पास एक क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट बिटवीन द टू, कॉस्ट सेंटर एंड प्रॉफिट सेंटर, तो कम से कम 2-3 पॉइंट आप लिखेंगे. Why I said that? Because cost center word has already come. You have to understand cost center word. और अभी और भी कई वर्ड यूज़ करेंगे, जैसे अकाउंटिंग कॉस्ट वर्सेस इकोनॉमिक कॉस्ट. This also very important. What is difference between accounting cost and economic cost? आप लोग और कुछ ना हो, मैं जो वर्ड बोलता हूँ वो ज़रूर नोट कर लिया कीजिए. बाद में आप चाहें तो गूगल से भी सर्च करके पढ़ सकते हैं, लेकिन वो नोट ही नहीं करोगे तो क्लास से बाहर जाते जाते भूल जाओगे. तो और जब इतना भूल जाओगे, अगर दोबारा रिवाइज नहीं करोगे कि एग्ज़ाम में आएगा, तो आप ये कंप्लेन करोगे कि ये तो कभी डिस्कस ही नहीं हुआ. इसलिए नोट करके रख लो. फर्स्ट इज दैट कॉस्ट सेंटर एंड प्रॉफिट सेंटर. Every center is a cost center, but every center is not a profit center. इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि हर प्रॉफिट सेंटर भी कॉस्ट सेंटर है, लेकिन हर प्रॉफिट सेंटर मतलब हर कॉस्ट सेंटर प्रॉफिट सेंटर नहीं है. तो जिस सेंटर पे रिवेन्यू काउंट होता है, जिस सेंटर पे रिवेन्यू जनरेट होता है, और जिस सेंटर का रिवेन्यू एंड कॉस्ट कैलकुलेट होता है, दैट सेंटर इज कॉल्ड प्रॉफिट सेंटर. जहाँ पे प्रॉफिट कैलकुलेट होता है वहाँ प्रॉफिट सेंटर काउंट होता है. हर सेंटर प्रॉफिट सेंटर नहीं होता.
मान लो आपने एक यूनिट खोला, वो एक कॉस्ट सेंटर है। हमारे स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के लिए ये जो एक क्लास सेंटर है, पीसीपी सेंटर है, ये क्या है? कॉस्ट सेंटर है या प्रॉफिट सेंटर है? इज इट अ प्रॉफिट सेंटर? वी आर नॉट जनरेटिंग एनी रेवेन्यू हियर, बट कॉस्ट तो दे रहे हैं ना, खर्च तो है, सर्विस दे रहे हैं। हमारा रेवेन्यू जनरेट तो सिंपली एक ही सेंटर पे होता है, सेंट्रल होता है। सारा रेवेन्यू जो जनरेट करना है, आपने फी एक बार पे किया, एक जगह पे किया, राइट? किसी भी कंपनी का रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर, आर&डी सेंटर, जहां रिसर्च होता रहता है, क्या वो कुछ सेल करता है? वो कॉस्ट सेंटर है या प्रॉफिट सेंटर है? कॉस्ट सेंटर है। खर्च तो वहां होता है ना, तो कॉस्ट सेंटर है। तो प्रॉफिट सेंटर वहां होता है जहां रेवेन्यू जनरेट होता है। अच्छा, जहां प्रॉफिट, जहां रेवेन्यू जनरेट होता है वहां भी कॉस्ट होता है ना? तो हर सेंटर कॉस्ट सेंटर है, लेकिन हर सेंटर प्रॉफिट सेंटर नहीं होता। प्रॉफिट सेंटर कहाँ होगा? जहां रेवेन्यू जनरेट होगा। अब यहां से एक मैनेजरियल डिसीजन होगा कि शुड वी मेंटेन द कॉस्ट सेंटर टू दैट एक्सटेंट, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, जहां प्रॉफिट सेंटर में क्लैरिटी है कि ये प्रॉफिट जनरेट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, दैट हैज टू बी काउंटेड, दैट विल बी डिसाइडेड हाउ प्रॉफिट सेंटर इज गोइंग टू बी कंसीडर्ड। क्लियर? दीज टू थिंग्स टुगेदर हैज टू बी काउंटेड। अब बैंक का अगर ब्रांच ले लो, जैसे सिर्फ एक कंपनी है, नाम है उस कंपनी का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इज अ कंपनी which is into banking business in a public sector where majority of share is held with the government, but still it is held by the public also. Who are shareholder is not important here, it is a company that is important. Now SBI headquartered at Mumbai, zonal headquarters, regional headquarters, regional quarters and so many branches. आप जहां रहते हैं वहां आसपास में भी एसबीआई ब्रांच होगा। नाउ द क्वेश्चन इज, एसबीआई ब्रांच इज अ प्रॉफिट सेंटर और इट्स अ कॉस्ट सेंटर? इट्स अ प्रॉफिट सेंटर, इट्स अ कॉस्ट सेंटर। कितने लोग कॉस्ट सेंटर हैं? एसबीआई ब्रांच और फॉर दैट सेक एनी बैंक, not only SBI, it could be PNB, it could be ICICI, it could be Citibank, any bank, HDFC, any bank it is there. Bank branch is a cost center or profit center? Cost center. Actually it is a profit center. Yes, every bank branch is a profit center. It is serving independently to that customer who are registered there. ऐसे आप लोग जो कॉस्ट सेंटर बोल रहे हैं, आज के डेट में ये कन्फ्यूजन थोड़ा हो सकता है, बिकॉज देर इज ए कोर बैंकिंग कॉन्सेप्ट वेयर ब्रांच हैज गॉट लेसर इंपॉर्टेंस। पहले बड़ा क्लियर था। पहले क्लियर क्या था? बिफोर कोर बैंकिंग, इफ यू आर से यू आर अकाउंट होल्डर ऑफ ए लाजपत ब्रांच, लाजपत नगर ब्रांच, you can't go and access Connaught Place branch, or you can't access Janakpuri branch. That was the time when it was a branch banking. But now because of core banking, which started in year 2007, after 2007, तो आप लोग सब उस न्यू जनरेशन वाले हैं जो सर 2007 से पहले की बात छोड़ दो, हम तो कभी भी किसी भी ब्रांच में कर सकते हैं। Rather in the digital banking, you don't require to go to branch. Your bank is in your pocket. So that is there. So that information you don't understand. But yes, there was a time when branch banking was there. It was a pure profit center. किसी ब्रांच में ज़्यादा कस्टमर हैं, अब ब्रांच के पास ज़्यादा डिपॉजिट है तो ब्रांच ज़्यादा रिच है, ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन उसके होंगे। जिस ब्रांच के पास कम डिपॉजिट है, इसीलिए जब ग्रीन पार्क का ब्रांच था वो ज़्यादा खुश रहता था मुखर्जी नगर ब्रांच से। मुखर्जी नगर ब्रांच जो था, मुखर्जी नगर, यू नो, इट इज इन नॉर्थ दिल्ली, इट इज अ प्लेस। एंड व्हाई इट इज फेमस? व्हाई इट इज फेमस? यूपीएससी वाले सारे वहाँ रहते हैं।
और सब आके वहाँ बैंक में अकाउंट खुलवा लेते हैं पास में, और 100 रुपये 200 रुपये का ट्रांजेक्शन करते रहते हैं। बैंक में पैसा आया नहीं घर से, 2-4 दिन के अंदर पूरा खाली कर देते हैं, तो बैंक में रहता ही नहीं है पैसा। वाई ग्रीन पार्क और साउथ एक्स वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर द सेम बैंक? बिकॉज वहाँ बिजनेसमैन का अकाउंट रहता था, तो अकाउंट में क्या होता है, पैसा ज़्यादा पड़ा रहता है। अब देखो सेम बैंक, 2 अलग अलग ब्रांच, 2 अलग अलग स्टाइल। आर यू गेटिंग दैट कि कैसे बैंक के लिए होता है? ICICI स्टार्टेड डूइंग नॉनसेंस। व्हाट ICICI डूइंग? जब ATM इंस्टॉल किया तो जो स्टूडेंट्स होते थे वो 100 रुपये निकालने के लिए ATM में क्यू में खड़े हो जाते थे। निकाला, मूवी देखा, थोड़ा चाट वाट खाया, कहानी ख़त्म। तो ICICI ने क्या किया कि 500 और 1000 का ही नोट रखना शुरू किया उसमें, कि आप 100 निकाल ही नहीं सकते हो। तो पीपल स्टार्टेड गेटिंग इरिटेशन। रिजल्ट क्या होता था? कस्टमर वॉज नॉट हैप्पी। और ग्रीन पार्क, अच्छा जैसे होता है क्या है कि देर इज इन्वेंट्री मैनेजमेंट। आई थिंक यू विल स्टडी कॉर्पोरेट फाइनेंस नेक्स्ट सेमेस्टर। अभी नहीं है ना? नेक्स्ट सेमेस्टर आप कॉर्पोरेट फाइनेंस पढ़ोगे। इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. So bank's inventory is also very important, and especially in ATM. How much currency should be filled in the ATM so that it should keep on serving. तो जहाँ लंबी क्यू है मुखर्जी नगर में 100 रुपये 200 रुपये निकालने वालों की, वहाँ तो क्यू लंबी है लेकिन विड्रॉल कम है, इन्वेंट्री कंजम्पशन कम है। और ग्रीन पार्क में क्या था, हर कोई अपनी फुल कैपेसिटी जो निकाल रहा है वो 20,000 25,000 50,000 निकाल रहा है, जिसकी जितनी कैपेसिटी है। अब अगर सपोज करो 20 लाख करेंसी का इन्वेंट्री है ग्रीन पार्क में, और 20 लाख करेंसी का इन्वेंट्री है मुखर्जी नगर में, यहाँ 20 लाख में मालूम हुआ 6-7 लाख ही निकला टोटल 24 घंटे में, जबकि फुल टाइम मशीन यूज होता रहा। मशीन खाली नहीं रहा, एक के बाद एक बैक टू बैक यूज हो रहा है। और वो मशीन कितना डिस्पेंस कर पाया? 7 लाख रुपीज। मैं जो भी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं आपको रिसर्च स्टडी के बाद दे रहा हूं। तो 7 लाख रुपीज निकला, मशीन 24 घंटे काम करता रहा। वियर एंड टियर आउट भी मशीन का होता रहेगा। और दूसरी तरफ मालूम हुआ 20 लाख रुपया रखा आपने, 4-5 घंटे के बाद मशीन आउट ऑफ कैश, फटाफट निकल गया। अब आपको क्या करना पड़ेगा? पूरी मैनेजमेंट आपको, अगर दोनों कस्टमर को आपको सर्व करना है, यू हैव टू मेक श्योर दैट एक एक्स्ट्रा मशीन वहां लगा दो इफ यू आर ऑफरिंग इट टू द अदर्स। और दूसरी तरफ वहां आप अपने रिप्लेनिशमेंट के टाइम फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दो। आप हाउ रिप्लेनिशमेंट फ्रीक्वेंसी कुड बी देयर। आप अगर दिन में एक बार रिप्लेनिश करते हो, आपकी अगर वान जाती है एक बार, तो आप वहां 2 बार भेजो। जरूरत पड़े तो उसका ट्रे का साइज बड़ा करो। बिगर ट्रे साइज विल बी हेल्पिंग देम आउट। अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ मैनेजमेंट। आपको अभी तक ATM सिर्फ ATM नजर आ रहा होगा, मैंने थोड़ा सा ATM के पीछे अंदर जाके आपको ट्रे का कॉन्सेप्ट भी बताने की कोशिश कर रहा हूं। कैसे आप अगर कल बैंक में नौकरी मिली और आपको अगर ATM मैनेज करने का चार्ज मिल गया और ऑनेस्टली आप कस्टमर को सर्व करना चाहते हो, तो इस फ्रीक्वेंसी को देखो कि कैसे ये मैनेज हो सकता है। ये लर्निंग जरूरी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कॉस्ट सेंटर कैसे करें। नाउ नेक्स्ट इज टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग। इन दैट टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग, हिस्टोरिकल कॉस्टिंग, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और टोटल कॉस्ट अप्रोच। हिस्टोरिकल कॉस्टिंग इज बेसिकली, एज द नेम सजेस्ट, इट इज बेस्ड ऑन द वॉट एवर हिस्ट्री इज देयर, द वे इट हैज बीन पास्ट कॉस्ट हैज बीन अपीयर्ड, दैट इज कॉल्ड हिस्टोरिकल कॉस्टिंग। Followed by that absorption costing or total costing is there, cost approach. Direct costing, which is directly associated to the production, that product charges. Marginal costing, how much additional margin is going to be there. When you are producing, next unit of production will take how much of the cost is called marginal cost. आप अगर 100 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हो, 100 यूनिट प्रोड्यूस करने का सपोज करो 500 रुपीज़ कॉस्ट है, तो एवरेज कॉस्ट 5 रुपीज़ हो गया। आप अब 100 यूनिट के बाद 100 फर्स्ट यूनिट 101 यूनिट आप प्रोड्यूस करने जा रहे हो, आपका कॉस्ट क्या राइज कर रहा है?
और आपका कॉस्ट अगर 500 से बढ़ के 502 हो रहा है तो आपका 2 रुपीज़ मार्जिनल कॉस्ट है. It will decide how long you will keep on producing. One side your constraint will be there, that how much is your capacity of production, and I am assuming you have not touched your full capacity, then you will keep on deciding depending upon your whatever marginal cost of production is there. And not only that, how long you will keep on producing, till the time your marginal cost is lesser than equal to marginal revenue. जो एडिशनल प्रोडक्शन का जो रेवेन्यू जनरेट होता है उससे उसके बराबर या उससे कम अगर आपका कॉस्ट है, कीप ऑन प्रोड्यूसिंग. You will be always increasing your profit margin because you are contributing towards profit contributions. That is what the decision will be there. Similarly, a standard costing. A standard costing is, you know, that so many price keep on fluctuating. So we set a fixed standard. Instead of fluctuating the price again and again, your raw material price has fluctuated. But if you continuously fluctuate your price, then in that case it is going to be a trouble to the customer. It will be mentally disturbance. That's why it is required that why not you adopt a standard costing. What is the basic essence of the standard costing? You take a upper and lower limit until unless the price has pierced to this or going down this, you will not revise the price. आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का ऊपर नहीं टच किया है. मान लो अगर मैं कहूँ कि 110 रुपीज़ से लेके 100 रुपीज़ तक का अगर प्राइस कॉस्ट फ्लक्चुएशन है तो मैं प्राइस इसका रखूँगा 100 या 105. अब 105 110 तक क्वार्टर करेगा, 100 को क्वार्टर करेगा, तो रिजल्ट क्या हो गया? एक टनल बन गया. उस टनल में आपने प्राइस फिक्स कर दिया. अगर ये 110 से ऊपर जाएगा तब मैं रिवाइज करूँगा. अगर इस बीच में फ्लक्चुएट कर रहा है तो चेंज नहीं करूँगा. ये सब बड़े बड़े प्रोडक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है. फॉर एग्जांपल ऑयल प्राइसेस, पेट्रोलियम के प्राइस जो आप देखते हो, फ्लक्चुएशन एवरी मोमेंट होता है, बट यू विल नॉट बी चेंजिंग द प्राइस एवरी मोमेंट. आप मालूम हुआ अगर सपोज करो आप रिफिल करो, रिफिल करते करते प्राइस चेंज हो रहा हो, प्राइस एक्चुअली चेंज करता है उस तरीके से. सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है प्राइस चेंज करने का. सबसे फास्टेस्ट प्राइस चेंज करता है किस प्रोडक्ट का? गोल्ड का. उससे भी फास्ट चेंज करता है. कहोगे शेयर का, उससे भी फास्ट चेंज करता है. सबसे फास्टेस्ट प्राइस चेंज होता है करेंसी का. जितनी देर में आप स्क्रीन देख रहे हो उतनी देर में प्राइस बदल जाएगा. और कभी कभी ग्लोबल हैपनिंग्स इतनी फास्ट होती है कि आपको लगेगा स्क्रीन खराब हो गया. इतना फास्ट चेंज करता है प्राइस. तब क्या करेंगे? अगर ये इंटरनेशनल ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जब ट्रेड करते हैं तो वो इफेक्ट करता है, लेकिन जो एक्सचेंज करता है बैंक से फॉर नॉर्मल ट्रांजैक्शन, तो बैंक क्या करती है? एक अपना एक एवरेज प्राइस बना देती है और वो रेट ज़्यादा चेंज नहीं करती है. थोड़ा सा नेगेटिवली रहता है कस्टमर के लिए क्योंकि वो हायर रखती है अपना, और वो तब तक चेंज नहीं करती है जब तक बहुत बड़ा चेंज ना हो जाए. तो बैंक अपने फ़ायदे में रहती है, लेकिन बैंक फिक्स कर देती है प्राइस. तो आप अगर डॉलर डिनोमिनेटेड या यूरो डिनोमिनेटेड ड्राफ्ट बनवाने जाओ या पेमेंट बैंक से करवाओ तो आपको एक फिक्स प्राइस मिलेगा, कोई फ्लक्चुएशन नहीं. लेकिन अगर आप ट्रेड करो, कल आप अगर करेंसी ट्रेडर बनो तो आप देखोगे हर मोमेंट, वी सिंपली कॉल इट ब्लिंकिंग ऑफ आईज आर मच स्लोअर देन changing the price in the currency market. And you know what is the per day transaction in the currency market? Volume of transaction in the currency market? It is somewhere around more than $6.2 trillion. Per day transaction is there. So every player is very small. In detail you will study, both BMS and BBFIA have to study this in International Finance 6th semester. You will study that. So market is like that, where price can keep on changing. So there standard costing or uniform costing is going to apply. Uniform costing to all.
Sometime you may not be necessary. Every production has got a different kinds of pricings, but costing is going to be uniform. So somewhere you may not be able to make profit, somewhere you will have additional profit, and then overall profit will be counted. Uniform costing helps a lot, or sometimes cost per head is allocated to a particular product. एक simple information आपसे शेयर करता हूँ, which will help you to understand how different costing approaches are adopted by the company. Cost का detail after research analysis, it came that in Maruti Udyog Limited, at that time it was not Alto, it was Maruti 800. It was found that Maruti 800 was a loss-making product. Product-wise, we decided Maruti 800 was a loss-making product, and rest of the products were profit-making product. Listen very carefully, and managerial decision has to be there. This is a decade back I'm talking, discussing in the class. So my simple question was there, which I asked there, I'm asking you again. What is your suggestion to Maruti if 800 is a loss-making, or now you can substitute 800 to Alto. If Alto is a loss-making product, rest other products of Maruti is a profit-making product, what is your suggestion to the Maruti Udyog Limited? आप लोग बोलिए कुछ, हाँ बोलिए. Very good. To stop the production of Maruti Udyog Limited. Sorry, to Alto. यही बोलना चाह रही है ना, आल्टो का प्रोडक्शन बंद कर देना चाहिए. वहाँ भी आंसर यही आया था, 800 का प्रोडक्शन बंद कर देना चाहिए. एनी अदर अल्टरनेट आंसर? प्राइस रिड्यूस कर देना चाहिए. ओके, प्राइस इंक्रीज कर देना चाहिए. फिर से बोलना. ओके, ठीक है. आप भी कुछ बोल रहे थे, बोलिए. अच्छा, कॉस्टिंग का मेथड दूसरा देखना चाहिए. ओके, आपके ब्रेन में पहला क्वेश्चन ये आना चाहिए कि ऐसा हो क्यों रहा है, जबकि इतने कोई डाउट नहीं है कि वॉल्यूम ऑफ आल्टो मस्ट बी हायर देन द अदर प्रोडक्ट. या उस समय जो मैं जिस समय का एक्चुअल केस स्टडी है, मारुति 800 ज़्यादा बिक रहा होगा. तो ऐसा क्यों है कि मारुति 800 लॉस में है और दूसरे उसी के प्रोडक्ट प्रॉफिट में हैं? इसके पीछे कॉस्ट का कॉन्सेप्ट था, जो ये बता रहा है ना, कॉस्ट का चक्कर था. क्या कॉस्ट का चक्कर है, मैं बताता हूँ आपको. देखिए कॉस्टिंग कैसे फ़र्क डालता है. जब ये आंसर आया मारुति 800 बंद हो जाना चाहिए प्रोडक्शन, हम बोले जिस दिन मारुति 800 का प्रोडक्शन बंद हो जाएगा उस दिन सारे प्रोडक्ट लॉस में चले जाएंगे. जो प्रॉफिट दे रहे हैं, अब आप इशारा समझो, कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट समझो कि अगर मारुति 800 को आपने बंद कर दिया तो जो दूसरा आज प्रॉफिट पे मुस्कुरा रहा है वो सारे लॉस में चले जाएंगे. इसका मतलब कुछ तो चक्कर है. एक्चुअली जब 1983 में मारुति ने स्टार्ट किया था तो स्टार्ट 800 से ही किया था. ओनली प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट रेंज से स्टार्ट किया था. बाद में प्रोडक्ट वैरायटी तैयार हुआ. तो जितने भी कॉस्ट कॉन्सेप्ट हैं, सारे कॉस्ट कॉन्सेप्ट मारुति 800 पर डाल दिया गया. जैसे एक सबसे इंपॉर्टेंट एलाइड कॉस्ट की बात करता हूँ, जब आप प्रोडक्ट परचेज करते हो तो आपको दे देता है कि आपको 3 सर्विस फ्री. ये सर नॉट, आपकी सर्विस फ्री है, खरीदने के बाद 3 सर्विसेज आप फ्री करवा सकते हो. अब थ्रू आउट कंट्री जो मारुति उद्योग का सर्विस स्टेशन है वो किसी फ्रेंचाइजी के पास है, किसी के पास है, जो ले हुए मारुति का नहीं है, किसका, किसी XYZ पर्सन का है जो सर्विस स्टेशन रन कर रहा है. लेकिन उसने सर्विस पावर, सर्विस कंडीशन ले रखा है. आपको तो वो फ्री दे रहा है. आपके पास एक बुकलेट होगा, उसमें कूपन होगा, कूपन आपसे वो ले लेता है, आपको फ्री स्टैंपिंग बिना किसी पेमेंट का सर्विस करके आपको दे दिया.
वापस कर दिया। आप सर्विस से खुश हैं, लेकिन क्या वो बिना चार्ज किए लेगा? वो पेमेंट कौन लेगा? मारुति को देना है। अब उसका जितना बिल आ रहा है, पूरे कंट्री में जितने भी सर्विस स्टेशन हैं जो क्लब करके आता है, वो सारा क्लब करके मारुति उसको पेमेंट कर रहा है, सबका पेमेंट रिलीज कर रहा है। और अब जैसे प्रोडक्ट वैरायटी बढ़ना शुरू किया तो प्रोडक्ट तो बढ़ गया। अब मारुति 800 की जगह अगर मारुति के जितने दूसरे वर्जन हैं वो सारे, चाहे SX4 हो या कोई भी हो, सारे सर्विस हो रहे हैं, लेकिन सारा बिल किसको जा रहा है? 800 को। सर्विस किसी और की हो रही है, पेमेंट किसी और का हो रहा है, वो क्लब हो जा रहा है, फाइनल एक फिगर आ रहा है सामने। तो ऐसा तो है नहीं कि जब नए प्रोडक्ट बन गए तो वो सर्विस वहाँ नहीं हो रहा है, वो भी सर्विस हो रहा है, लेकिन आप बिल किसको दे रहे हो? उसको। रिजल्टेंट होता है एक ने सबका भार उठा रखा है, रिजल्टेंट वो लॉस में चला जाता है। कोई कंपनी के लेवल पे फर्क नहीं पड़ रहा है, ध्यान दीजिएगा, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए कंपनी लिस्ट बॉर्डर्ड है इसके लिए। कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे क्यों फर्क नहीं पड़ रहा है? क्योंकि उसी कॉस्ट को अगर आप अलग अलग प्रोडक्ट में भी डालते रहो तो आपका इंटरनल मैटर है। इज इट क्लियर और नॉट? इट इज एन इंटरनल मैटर। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं डिस्कस कर रहा हूँ। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आप प्रोडक्ट रेंज को स्पेसिफाई कर रहे हो। आपका प्राइमा फेसी फर्स्ट लेवल रिएक्शन वाज करेक्ट, stop the production which is making loss, but at least peep inside why it is making loss, right or not? Management accounting ask you to do that कि अगर लॉस है तो क्यों है। एक दूसरी बात बताता हूँ, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। बड़े बड़े जानते हो ट्रक्स चलते हैं गाड़ी को लेके, हेवी कॉस्ट होता है। आप एक छोटा ऑटो बुक करो तो देखो क्या चार्ज होता है। तो वो मूवमेंट, वो जो चेन्नई से निकला और कश्मीर तक जा रहा है, दिल्ली तक आ रहा है, वो ट्रक का कितना किराया होगा? और उसमें गाड़ी सिर्फ 800 तो नहीं आ रही है, आ तो और भी रहा है, उसका कॉस्ट भी सब उसको जा रहा है। तो वो क्या करेगा? अल्टीमेटली बोले। और कंपनी क्यों नहीं इसको सेग्रीगेट करती है? कंपनी कहती है क्यों सेग्रीगेशन में अपना मैं पैसा खर्च करूं और अकाउंट में इतना लगाऊं, मुझे एज ए कंपनी लेवल क्या फ़र्क पड़ता है? ये कंपनी लेवल पे अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग के एंगल से देखो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। मैं अपने इस पॉकेट में पैसा रखूं चाहे इस पॉकेट में पैसा रखूं, क्या फ़र्क पड़ता है? तो कंपनी लेवल पे फ़र्क नहीं है। फ़र्क किस लेवल पे है? प्रोडक्ट लेवल पे है, प्रोसेस के लेवल पे है, एंड मैनेजमेंट डिसीजन लेवल पे है। दैट इज व्हाट यू हैव टू डिसाइड। नेक्स्ट वन इज जॉब कॉस्टिंग। व्हाट इज जॉब कॉस्टिंग? आप लोग सब अकाउंट पढ़ के आए हो ना, तो थोड़ा सा तो बताओ व्हाट इज जॉब कॉस्टिंग? जॉब कॉस्टिंग इज व्हेन यू हैव ए स्पेसिफिक जॉब। एक ऐसा सेंटर बताओ जिसमें जॉब कॉस्टिंग होती है। एक स्पेसिफिक जॉब पे जो कॉस्ट लगता है, दैट इज जॉब कॉस्टिंग। यू गो टू गैरेज, एंड गैरेज में आप जब आप अपने व्हीकल को लेके जाते हो आप रिपेयर के लिए या सर्विस के लिए, तो आप हर व्हीकल की अलग बिल बनेगा। क्यों अलग बिल बनेगा? डिपेंडिंग अपॉन द सर्विस रिक्वायर्ड। यू गो टू रेस्टोरेंट, हर टेबल और हर थाल का अलग बिल होता है। कोई सिर्फ चाय पी के निकल आया और कोई पूरा खाना खाया, दोनों का बिल सेम नहीं हो सकता, राइट? इट्स अ स्पेसिफिक जॉब। सो इज टू हॉस्पिटल। हॉस्पिटलाइजेशन के बाद आप जानते हैं सबका बिल अलग अलग है। क्यों अलग अलग है? हर पेशेंट का अलग जॉब है, हर पेशेंट पे एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है। नेचर ऑफ सर्विस, materials consumed, medicine provided, nature of supports given, all are different. This is a job based exercise. तो जॉब बेस्ड एक्सरसाइज में जॉब कॉस्टिंग इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसी तरह से ABC, व्हाट इज ABC? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, वॉट एवर एक्टिविटीज आर एसोसिएटेड। टारगेट कॉस्टिंग, LCC and quality costing, 3 I had discussed last class. Do you remember?
What is target costing I discussed? It was basically related to, most important component, target costing related to making a product within a particular cost frame. आपको एक कॉस्ट लिमिट दे दिया गया, इसी में काम करना है. Two important cost concept I had shared with you. One was called as cost plus concept, another was target cost. Cost plus concept, first calculate the cost and then add the profit margin to make the price. So cost plus concept bring the price as a derivative, whereas in a target costing, first you set a price, then bring your cost calculation. Any example of target costing? Nano car, very good. Anything else? एंडोवर में क्या है? प्रोडक्शन बंद हो गया. वो नैनो एग्जाम्पल प्रोडक्शन बंद होने के लिए नहीं दे रहे थे. वो प्रोडक्शन बंद होने के लिए नैनो एग्जाम्पल नहीं दे रहे थे कि नैनो बंद हो गया. It was basically example was there that price was first declared and then they tried their best to produce within that price limit. Okay, that is what target costing is. Why target costing is even cost plus concept we call it American style of costing, whereas target costing is called as Japanese style of costing. You people were taking the decision when we were talking about Maruti 800 and some you suggested that raise the price. Raising the price for any product should be your last resort. If everything else has failed, not possible. Keep that in your back of mind. Raising the price will not give you sustainability for a longer period because you will become incompetitive in the market and especially not possible at all in the global market. ग्लोबल मार्केट में आपको ये पॉसिबल नहीं है कि आप प्राइस रेज करके compete करोगे. आपको हर हाल में कॉस्ट रिड्यूस करके compete करना है, अपने क्वालिटी को मेंटेन करके compete करना है. तो ये LCC क्या होता है? लाइफ साइकिल कॉस्टिंग. When you are talking about the entire product life, that is very important. Life cycle costing, good number of classical examples are there, which is actually, since I have always, these all are advanced costing style. And fortunately, I have been engaged into these style in the actual project environment. That's why I do understand that these are the tools through which you can make wonders. You can maintain yourself with effective approach and reducing the cost to a greater extent. What is life cycle costing? Plan your product and make sure that whatever cost you are going to count, it is for entire life of the product. And if you are talking for entire life of the product, it will always be cheaper than if it is a phased product costing. Generally for a bigger infrastructure, just a minute. Bigger infrastructure, these are the products which are very important. One example, this LCC, not available into most of the books, actually hardly practiced in India. Though it is at least 30-40 years older concept, we are still very laggard in the cost management point of view. अभी भी हम ट्रेडिशनल कॉस्ट पे बैठे हुए हैं, इसलिए ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस के लिए ज़रूरी है समझना. लाइफ साइकिल कॉस्टिंग में आप प्रोडक्ट के कॉस्ट को कैसे निकालते हैं वो देखने की ज़रूरत है. जैसे अभी इंडिया में कैसे कॉस्टिंग होती है वो बताऊं तो फिर आपको ये ऊपर जो हिस्टोरिकल कॉस्टिंग या एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, दीज आर द कॉस्टिंग्स विच आर प्रैक्टिस्ड इन इंडिया. इंडिया में लाइफ साइकिल कॉस्टिंग नहीं है. अगर एक दो प्लेस पे है भी वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में बेटर मैनेजमेंट के लिए है. तो एक एग्जांपल जिसमें लाइफ साइकिल कॉस्टिंग को किया गया, एक 39 किलोमीटर का रोड बनना था. रोड के कॉस्ट की बात बता रहा हूँ आपको. 253 करोड़ का प्रोजेक्ट था.
and how the entire costing went on, life cycle costing. Road, always you know, it is a public property, public goods, government owns it, and some private party makes it. So it was a 15-year contract which was there. It was made in Meghalaya. Shillong outer road, ring road is there, outer road is there, bypass, outer bypass is there, which is of 39-kilometer range. Being a financial consultant into that project, I am sharing you that how it has been prepared. वो 15 years में 3 years was for making of the road and 12 years was for maintenance of the road. ये दो प्रोडक्ट एक्सरसाइज हैं. और ध्यान रखना कि आपके एग्जामिनेशन में इन सब तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर के क्वेश्चन आ सकते हैं. कॉस्टिंग अलग अलग, क्योंकि साइट कॉस्टिंग भी आ सकता है और साइट कॉस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. तो जब ये रोड को तैयार किया गया, दे कंप्लीटेड इन जस्ट 25 months ऑफ टाइम. तो 3 साल में आप क्या किए, 2 साल 1 महीने में कंप्लीट कर लिए रोड को, और बनाते वक्त थोड़ा सा रोड को बेहतर बना दिए, कॉस्ट को थोड़ा, रोड के स्ट्रेंथ को, स्पेसिफिकेशन को बड़ा कर दिए. रिजल्टेंट वॉज दैट रोड यू डोंट रिक्वायर टू मेंटेन एनी मोर बिकॉज डैमेज विल नॉट टेक प्लेस. You are knowing it, you have to maintain it for 12 years of time. And interestingly, when they made it, it was, instead of 253 crore, they completed the entire structure in 229 crore. 24 crore rupees saving was there. Approximately 10% saving they created. एंड जैसा स्पेसिफिकेशन रोड का बनता था उससे बेहतर रोड बना दिया. पूरा मैनेजमेंट अकाउंटिंग इसमें इन्वॉल्व हुआ. कैसे इन्वॉल्व हुआ, क्या हुआ, ये केस स्टडी के फॉर्म में कभी आपको मैं किसी और क्लास में, जब कॉस्ट के बहुत से कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे, एक मौका निकाल के आपको बताऊंगा. बिकॉज आई हैड बीन एज अ कंसल्टेंट टू दैट प्रोजेक्ट. हेवी डीपर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, बट इंडिया इज मेकिंग दैट पॉसिबल वॉट वे इट कुड बी अप्लाइड. ये लाइफ साइकिल कॉस्टिंग का एग्जाम्पल था जिसमें आपने रोड बनाते वक्त पूरे 15 साल नहीं बल्कि पूरे इंटायर लाइफ ऑफ द रोड को आपने डिसाइड कर दिया. एंड बनाते वक्त ये स्पेसिफिकेशन ऐसा दिया कि इट शुड नॉट बी डैमेजिंग आफ्टरवर्ड, बिकॉज इफ यू मेक ए रोड and let's say road get damaged in 2 years of time, again you repairing cost will be there, problem will be there to the commuters. That commuter problem and delay in the commuting, disturbance, wear and tear out of vehicle, or delay in the transportations, every cost has to be counted and that cost should be minimized. So that's the way it has been there. Similarly, if you talk about Delhi Metro costing, it is again an interesting classical costing exercise which you can go through. Hardly any book talks to that extent how costing is going to be there. And this is the point, you have to differentiate yourself from a normal cost accountant. Like in a BCom you study the paper, and here in BMS and BBFIA you are studying the paper. This is the point, and nature of question will make you different. So, and last is the quality costing associated to it. To make sure that your product is quality product, your product is tested with quality, whatever establishment has to be made, whatever the quantum of expenditure has to be used, that is called quality cost. And what is the most important and beneficial part of quality costing is that whenever you apply your quality costing, it will help you into getting that it will help you in making sure that no further additional cost because of poor quality, because of defects appear in your organization. Defect is a very heavy cost in the global competitiveness. If your product is defective, it may lead to your question mark on survival. You will not be able to survive in the industry.
So these are the certain ways through which is there. Now we will be slowly turning towards numerical. Have a look of it, how numerical we are going to cover up. So direct cost or prime cost is there. Which one is direct material, direct labor and direct overhead? And there is an indirect cost or indirect overhead. So two costs are there, direct material, direct labor, direct overhead is called direct cost. There is a second one is indirect cost. So what are overhead? It may be based on functional classification, classification on behavior of the expenditure, element wise classification, classification according to the nature of expenditure, capital expenditure and revenue expenditure. So what is your functional classification on the basis of manufacturing, production and or work overheads, maybe administrative overheads, maybe selling and distribution overheads or research and development overheads. And on the basis of behavior, it could be fixed variable or semi variable, and that element wise it may be in the nature of overhead, could also be raw material, labor and overheads. And steps in overhead accounting steps. First, the overhead is collected from different sources. Primary distribution of overhead, allocation and appropriation of expenses to the cost centers, reapportionment of service departments, cost to production departments, known as secondary distribution. You start allocating to everyone, and then various department could be there. Whenever we are using the department, it may be production department, maybe service department, maybe partly production department and service departments. These various departments are there, and then you make cost allocation associated to it. So these all are just I am rushing through because you have to have it through numericals. We'll be just going to numerical how you are going to have cost allocation. Cost allotment of whole item of cost to cost centers. Cost apportionment is there. Apportionment means proportionately you are distributing the cost to everyone. And then finally, whatever the various basis is there for overhead allotments, it may be per unit area, maybe per machine, maybe per unit of electricity, maybe per unit per liter of the fuel or per unit of machine, whatever this, there could be n number of ways depending upon various conditions. It has to be there. Like I was talking per branch. Here we can have per student allocation. Whatever the number of total cost is coming divided by number of students, it will become per student cost to me. So that allocation is going to take place. So basis could be service or use or benefit, maybe ability to pay. Yes, that is also very important. Ability to pay method is there. Every product may not be having ability to pay. जिसका ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन वो ज़्यादा पे कर सकता है, जिसका कम प्रॉफिट मार्जिन वो कम पे करेगा. या जैसे मारुति में मैंने आपको एग्जांपल बताया, एक प्रोडक्ट पूरा पे कर रहा है, रेस्ट प्रोडक्ट्स पे नहीं कर रहे हैं ओवरहेड के एक्सपेंडिचर को. सिमिलरली इफिशिएंसी मेथड इज देयर. जो जितना इफिशिएंट होगा उसको ज़्यादा पे करने की कैपेबिलिटी है तो पे करेगा. सर्वे मेथड बेसिकली डे वॉट एवर सर्वे इज डिसाइडिंग. It might be possible you having certain cost, but some cost is actually not directly related. So that cost will be, a direct, you can say period cost. Rest cost could be product cost. Like that you can segregate. So various examples has been there. You can directly allocate to these examples. It's not working. No? Okay. Oh. So, from here, excuse me, today whatever we have discussed in the class theoretical portion, please at least 6 to 7 questions in your internal test is going to come.
at least 6 to 7 questions, whatever we have discussed, and 1 or 2 questions from the previous session. So you can consider more than 8 questions has been covered for internal. 8 question means 8 marks, means 8% of your total examination. Now what we are going to cover is for even final examination, and in final examination also, if theory question is there, one small theory question, maybe half mark question, half question can come from here. So that way around more than 12 to 14% or 15% of your examination is covered here. So keep that way in mind. Now I am going to make it, what we are starting is going to be a full question, and that full question start from here. I'll not take you to the numerical directly. I'll give you a base 5 minutes talk on it, and after 5 minutes talk, we will be uh, stopping, and that will give you a kind of a mental preparedness for next class directly to numerical. Direct numerical will be there. And this, what we are going to say, methods of reapportionment or redistribution, it is going to come in your examination. Is it visible there? So direct redistribution, step method or reciprocal service method. 3 portions are there. Any of the 3 can come. किसी 3 में से कोई भी एक आ सकता है. So let's look into that direct redistribution, what it says. Please, cost of service departments are directly apportioned to production department without taking into account any service rendered by one service department to another service department. Direct redistribution. See the essence of the redistribution. You have manufacturing, you have service. Service is not directly related to revenue generation. It is manufacturing which produces the product that is related to revenue generation. So how you allocate? Suppose you have A, B, C, D, 4 service department, and 4 service department is having different expenditures. Whatever expenditure is for service department, ultimately that expenditure is not generating revenue. For any production center you consider, say any manufacturing item is there, anyone is producing product, but they have HR department, they have department which is purchasing, they have department which is making, say, grievance, handling the grievance of customer. That is not generating any revenue, but still there is expenditure. So how to allocate the cost? So it says, say, first method we are using is called direct redistribution. So direct redistribution means all these expenditure directly you put to the production department, so that overall cost could be available to you. Say direct material, direct labor and direct overhead has no problem. That is, problem is what is indirect, how you are going to allocate, and that allocation is going to make. So look into that, how it is there. Possibility of overcharge or undercharge of production department could be possible here, but how you are going to make it. So let's understand this. Why it is not visible? Ram? नहीं वो तो ठीक है, देखो आप वो ठीक है, वो ठीक है. Wherever there is a color, it is not visible. पहले वाले में भी एक कलर में था, विजिबल था.
फुल स्क्रीन किया हुआ है क्या सर आपने पीपीटी? एक बार एग्जिट कर सकते ऐसे दिखा सकते हैं क्या? दिखा देता हूँ. Excuse me, please jot down this question and I need your answer. Just a minute. This one first. पहले इसको नोट कीजिए. Just a snapping will not help you. I am reading it out for you. It says apportion the expenses of service department S2 in proportion of 4:4:2 and of S1, that's the first service department, in the ratio of 3:3:4 to department P1, P2 and P3 respectively for information given below. Now what question is here? It says that there are 3 production department P1, P2, P3 and 2 service department S1 and S2. S1 and S2 is the overhead departments which has got a cost. Production department has got another cost. So how you are going to allocate it? Allocation ratios has been specified to you. Allocation ratios indicates it's a 4:4:2 as well as 3:3:4. S2 डिपार्टमेंट का 4:4:2 है. S2 डिपार्टमेंट कितना कॉस्ट हो रहा है इसमें? How much is there? And the way it has been mentioned in the downside, which is your example, look very carefully how it is going to work. आप 4:4:2 कर रहे हो तो 6,000 जो कॉस्ट है S2 का 6,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए. How much it will be there? It is going to be 2,400, 2,400 and 1,200. Right? Similarly for S1 is 4,000 is the S1. You will find out it is going to be 3:3:4. 3:3:4 means it will be whatever 4,000 is there, 1,200, 1,200 and 1,600. That's the proportion it has to be distributed. The moment overhead distribution has been made, you know the total cost of P1. So P1 will have a cost. Direct cost to P1 is 8,000. Allocated cost from S1 is 1,200 and from S2 is 2,400, making it total 11,600. So now you know that overhead cost has been allocated to P1 11,600, cost allocated to P2, it is 7,000 was direct cost, 1,200 allotted from S1 and 2,400 to S2. So from S2 2,400, from S1 1,200, making it total 10,600.
Similarly to P3, ultimately total cost is going to be 8,800. What it simply indicates that now you have got production system wise or different production department wise what is going to be the cost, and whatever the number of units produced, you divide by number of units, per unit cost will be available to you for the product. You can add the profit margin and you will get the final price. Per unit price will be available to you. So this is one which you can calculate. Now question is, this was direct redistribution in a given ratio. Sometime how the question will be complicated. It's a complication will appear when you're, instead of directly giving to the ratios, it will give you a concept. Say machine hours time. If suppose I give how many hours machine of P1 runs, P2 runs and P3 runs, that information will be given to you. Or maybe cost to P1, P2, P3 could be the ratio. How much cost of P1, cost of P2, cost of P3 is there, that could be ratio. So you have to be very alert. Otherwise question is very simple. Question is not tough. What is important is here that just those tricks or those clicks you have to understand and you can apply. You will get that answer. Okay? So I am stopping here because step method and reciprocal service methods, it will be little complicated, but certainly we will do this in the next time. Okay? Now it is your turn to ask any question if you have any. Next time I'll start from here only. Whatever the portion, whatever the question will be there, direct redistribution, and most probably after next class I will be out from your session. Somebody else will take class. Okay? Thank you. Thanks a lot.